Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में और एक बढ़िया कोड के साथ आगे बढ़ेंगे. लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स. डू वी नो दिस? यस. प्रिंटफ एंड स्कैनफ से नंबर को कैसे एक्सेप्ट करना है ये हम लोग जानते हैं, राइट? ओके, पर इन दो नंबर्स के ऊपर क्या कैलकुलेशंस करना है? एंड कंप्यूट द स्मॉलेस्ट डिविजर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑन दिस. Now, when we are thinking about computing the smallest divisor, we know that अगर हम लोगों ने दो नंबर एक्सेप्ट कर लिए तो उनका स्मॉलेस्ट कॉमन डिविजर होगा व्हाट? 1, राइट? तो इसके कैलकुलेशंस के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली वी नीड टू गो ऑन कैलकुलेटिंग एंड चेकिंग कि कैसे लॉजिक डेवलप करेंगे टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर. और उसी चीज को आप क्या कह सकते हो? SCFD, राइट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू नंबर्स. उसके लिए सोचना है कि लॉजिकल स्टेप्स क्या क्या होंगे. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द GCD फॉर accepted two numbers, right? Okay, so in this case the first task and first algorithmic step will be accept the two numbers and put it into certain variables. For example, मैंने दो variables use कर लिए, number 1 and number 2, right? Assume that the user has entered 20 and user has entered 35 into this, right? Now this accepted two numbers का GCD calculate करना है, greatest common divisor मुझे ढूंढना है. Now when we are thinking about divisibility issues, so divisibility tester के रूप में एक ऑपरेटर काम करता है and that particular operator is मॉड्यूलस ऑपरेटर और मॉड ऑपरेटर, जिसको हमने डिस्कस किया है एज अ रिमाइंडर ऑपरेटर, राइट? सो अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो इस मॉड ऑपरेटर का रिजल्ट आता है 0, राइट? बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर गिव्स यू रिमाइंडर. नाउ कैसे सोचना है जीसीडी कैलकुलेशंस के लिए? डेफिनेटली व्हेन आई एम गेटिंग द टू नंबर्स, मुझे इन दोनों में से सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है वो पहले ढूंढना है, राइट? व्हाई आई वांट टू डू दैट? बिकॉज जब इन दोनों में से मिनिमम नंबर होगा 20, तो मैं उस 20 को मिनिमम नाम के वेरिएबल में मूव कर दूंगा, राइट? अगर नंबर 2 मिनिमम होता तो नंबर 2 को मिनिमम नाम के वेरिएबल में मैंने मूव कर दिया होता, राइट? ओके, व्हाई टू डू दिस? बिकॉज इस 20 के ऊपर वाले नंबर्स 20 को कभी डिवाइड नहीं कर पाएंगे. सिंपल मैथमेटिक्स, राइट? सो 21, 22, 23 ये जो नंबर्स है वो 20 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे. सो आई नीड टू कंसिडर द मिनिमम नंबर एंड वहां तक के ही नंबर्स जो इसको भी डिवाइड करेंगे एज वेल एज नंबर 2 को भी डिवाइड करेंगे, उनको मुझे देखना है कि उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, उनमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कौन सा है, right? So when I'm considering this as a minimum, then my test begins and I'll be starting from 1 2 से लेके उस मिनिमम नंबर तक. फॉर एग्जाम्पल अपने केस में मिनिमम नंबर क्या है? 20, राइट? एंड डेफिनेटली फॉर दिस पर्पज टू डू दिस रिपीटेडली आई नीड अ लूप. एंड यहाँ पे लेट्स गो ऑन यूजिंग द लूप विच इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम 1 से लेके 20 तक. एंड देन आई नीड टू गो ऑन टेकिंग सर्टन डिसीजन. ऐसा नंबर जो नंबर 1 को एंड नंबर 2 को दोनों को डिवाइड करे एंड वो मुझे ढूंढना है. एंड डेफिनेटली व्हेन आई गो ऑन लुकिंग फॉर दिस, मुझे यहाँ पे देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, राइट? सो व्हाट आई गो ऑन डूइंग इज यहाँ पे जीसीडी नाम का एक वेरिएबल मैं कंसिडर करूंगा, जीसीडी, राइट? ओके, एंड उसको कंसिडर करूंगा इनिशियलाइज टू व्हाट? -1. एंड देन यहाँ पे टेस्टिंग कैसे होगा प्लीज ऑब्जर्व. सो हियर आई विल गो विथ इफ number 1 mod and ये 1 to 20 I'll be indicating with the variable as what? I, and that will be loop variable, right? So number 1 mod I is equal to 0 अगर है and number 2 mod I is equal to 0 है. तो ये कौन सा कंडीशन है? मतलब I का ऐसा वैल्यू जो नंबर 1 को भी डिवाइड करेगा एज वेल एज नंबर 2 को भी डिवाइड करेगा, राइट? दैट विल बी अ कॉमन डिविजर, राइट? सो इस केस में व्हाट आई विल डू इज GCD इज इक्वल टू, मैं I का वैल्यू उसमें मूव कर दूंगा. अभी ध्यान से देखना है, लेट्स गो ऑन प्लेइंग विद दिस, राइट? जैसे ही I का वैल्यू 1 होगा
So 1 is going to divide this, 1 is going to divide this. So GCD में यहाँ पे value आएगा what? 1, right? Next to that, when I go ahead into this process, next number is 2. 2 is dividing 20, but 2 is not dividing what? 35. So 2 नहीं जाएगा GCD में, right? Next number is what? 3. 3 is not able to divide what? 20. So ये number भी नहीं चलेगा. Next is 4. 4 is able to divide the 20, but 4 35 को divide नहीं कर रहा है. So this number is not there. So 5. 5 कैसे है? So 5 is able to divide what? 20. As well as 5 is able to divide what? 35. तो उस केस में अभी 1 की जगह पे आएगा what? 5. I का value is moved into GCD. Next to that, right? I'll go with the 6. 6 is not able to divide this. 7 is not able to divide this. 7 20 को divide नहीं कर पाएगा, but 7 35 को जरूर करेगा. But we need to go on thinking about divisibility for both because we need to search for common divisor, right? Okay. 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10. 10 20 को divide कर पाएगा पर 35 को नहीं कर पाएगा. Like that, we can keep on moving, keep on moving, keep on moving, and यहाँ पे we will get into the result of what? This as a 5, which will be treated as कि मुझे जितने भी divisors मिले उनमें से सबसे end में जो divisor मिला, I'll be considering that as greatest common divisor. So this is what the logic that we are going to work with respect to what? This particular program, right? So let's think about how we can go on implementing this. Steps are very clean and clear. Let me summarize it. Accept two numbers, put them into the two variables. Next, search the minimum number out of these two. Step number 2, search the minimum number. Step number 3, starting from 1 till the minimum number, go on testing the divisibility test for number 1 as well as number 2. And जैसे जैसे common divisors मिलेंगे, put them into the GCD नाम का variable. The moment I come out of this loop, जो GCD का value होगा, that I'll be printing simply as GCD, greatest common divisor or highest common factor of these two numbers is so and so. इतना बढ़िया लॉजिक के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. So let's see how we can implement this particular code with the help of VS Code. So as usual, we are back into the VS Code, and यहाँ पे what I'll do is FPL assignments में I'll create a new file, and that will be FPL7.c, right? What I'll do is I'll copy this entire contents of form.c and we'll paste it into the FPL7.c, right? Okay, now we'll be purely concentrating on this. The first step is I need to go on accepting two numbers. So what I'll do is let's go with integer number 1, comma number 2. How to go on accepting this? We'll put as enter number 1, right? And यहाँ पे we'll go with the scanf as accept it in digit format and store it at address of number 1. Simple है, right? Now यहाँ पे what I'll do is I'll go with acceptance of another number, that is printf, and enter number 2, and यहाँ पे scanf is, right? Okay, and %d, and यहाँ पे करेंगे and number 2, right? So ये हुआ acceptance of these two numbers, and then we need to think about further aspects, right? So यहाँ पे what I'll do is one variable will consider GCD and इसको consider करेंगे as what? -1, right? Okay. Ultimately इसका value change होने ही वाला है बाद में जब हम लोग इसको loop के साथ काम करेंगे. And one more variable that I need कि accepted दो number में से minimum number कौन सा है, इसके लिए एक variable ले लिया minimum. Now the step number 2 is find out the minimum number out of the accepted two numbers. ये simple operation हम लोग conditional operator के साथ करेंगे, राइट? कैसे करना है प्लीज सी, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. मिनिमम नंबर इज इक्वल टू, मैं टेस्ट करूंगा नंबर 1 इज लेस देन अगर नंबर 2 है, सो नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2 है तो मिनिमम कौन सा हुआ? नंबर 1. सो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखेंगे नंबर 1, कोलन के बाद लिखेंगे नंबर 2.
आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नंबर 1 लेस देन नंबर 2. अगर नंबर 1 लेस है तो नंबर 1 विल बी मूव्ड इन मिनिमम, else number 2 will be moved in minimum. That's it. Very interesting thing, right? Okay, and now we need to go on thinking against for loop implementation. I'll go with integer I is equal to 0. Sorry, I is equal to 1 से start करेंगे क्योंकि 0 से divisibility तो infinite result देगा, right? So हम लोगों को शुरू करना है I is equal to 1 से, and I must be less than or equal to what? Minimum number and then I plus plus, right? Okay, and यहाँ पे decision making होगा if number 1 mod I is equal to 0 and number 2 mod I is equal to 0. तो यहां पे अभी डिसीजन कैसे, अगर ये दोनों को डिवाइड कर पाया I वैल्यू, तो मैं उसको कॉमन फैक्टर है ये, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो इसको हम लोग रखेंगे किसमें, जीसीडी में. जैसे जैसे कॉमन फैक्टर्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे ये जीसीडी का वैल्यू चेंज होता जाएगा. And the last common factor I'll consider it as what, greatest common divisor, right? So simple है. So GCD is equal to, I'll consider it as what, I value, right? Okay, and loop से बाहर आने के बाद यहां पे करेंगे printf and smallest common divisor is, right? Okay, and यहाँ पे directly put कर देंगे 1, right? But यहाँ पे we'll go with greatest common divisor is, right? Okay, and यहाँ पे %d and calculated value is present in what, GCD, right? Okay, now let's go on checking how we can go on executing this, and whatever we are thinking about logic implementation, ये हमको सही से result produce कर रहा है या नहीं, right? Okay, so I'll go on executing this. And it says that enter number 1. Number 1 I'll be entering as a 20, जिसके calculations हमने किए थे theoretical discussion में, and number 2 I'm entering as what, 35, right? So let's see what the result I'm able to see, right? So smallest common divisor is 1 and greatest common divisor is what, 5, right? Let's some few more practical aspects against this. For example, अगर मैं ऐसे कुछ कर रहा हूं, if I run this again, and if I could enter the number as 20 and what, 100, तो smallest तो 1 होगा ही, no doubt, right? But greatest common divisor क्या होगा, and इस केस में ये 20 होना चाहिए, right? Okay, so please observe this. It says smallest common divisor is 1 but greatest common divisor is what, 20. अभी बात करते हैं, दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर्स है, राइट? एक दूसरे का कॉमन डिविजर होने का पॉसिबिलिटी 0 है, तो उस केस में क्या रिजल्ट आना चाहिए? सो दैट इज अ वेरी पेक्यूलियर केस, प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी क्लोजली, राइट? फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर रहा हूं 11 एंड नेक्स्ट वन इज 17. स्मॉलेस्ट कॉमन डिविजर तो 1 होगा, नो डाउट, राइट? पर डू यू एग्री दैट ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 2 से आगे जो इन दोनों को भी डिवाइड कर पाए, राइट? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर व्हाट, प्राइम नंबर्स. तो इस केस में इनका जीसीडी आने वाला है व्हाट, 1. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि इस केस के लिए अपना कोड रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है. एंड हियर वी कुड बी एबल टू सी smallest common divisor is also 1 as well as GCD or SCF, highest common factor for these two numbers is also 1. I hope कि you understood this particular program जहां पे implementation is very simple, and please observe the stepwise concept. First is accept two numbers from user. Step number 2 is find the minimum number out of these two, and then step number 3 is run a loop starting from 1 से लेके minimum number तक, and then go on testing for divisibility test against both the numbers. जैसे जैसे फैक्टर्स मिलते जाएंगे go on keeping it into what, GCD. एंड जैसे इस लूप के बाहर आएंगे जीसीडी में वो नंबर होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होगा, उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया. वेरी इंटरेस्टिंग वन, आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है. इन केस ऑफ सम एरर्स प्लीज क्लिक अ photo of that and please send it on my WhatsApp. I'll come up with the error resolutions. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning. Thank you very much.